हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस कोर्स। वेलकम टू दिस स्टैटिक्स कोर्स। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है स्टैटिक्स का पार्ट 1। आज हम स्टैटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल आइडियाज। ओके, फंडामेंटल आइडियाज क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स में, उनके बारे में। एंड एक पॉइंट मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि स्टैटिक्स के पार्ट में देखो थ्योरी इतना ज्यादा है नहीं, बट वी हैव टू फोकस अपॉन इज बेसिकली प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर तुमने देखा हो प्रीवियस 10 साल या 20 साल के पेपर में, यू विल सी दैट दिस पार्ट से, स्टैटिक्स और डायनामिक्स पार्ट से डेरिवेशंस कम आते हैं। डेरिवेशन के ऊपर बेस करके प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं। सो दैट हैज बीन द प्रिंसिपल ट्रेंड एंड वी आर गोइंग टू ओबे दैट। सो जितना हमें थ्योरी जरूरत पड़ेगा हम उतना ही थ्योरी करेंगे, और हमारा मेन फोकस होगा वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू हियर दैट आई विल एक्चुअली truly admit that मार्केट में जो भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, जैसे कृष्णा सीरीज का बुक हो गई ऑलरेडी, IMS का मटेरियल हो गया ऑलरेडी, हम जो एकेडमी में प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आल्सो। एंड आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक द बेस्ट इन ऑल दोज मटेरियल्स एंड गोइंग टू प्रेजेंट टू यू। ओके, बिकॉज आई डोंट सी एनी हार्म, और आई डोंट सी कि अगर एक मटेरियल अच्छा है तो उसे ओबे करने में, उसे पढ़ने में, आई डोंट थिंक देयर इज अ problem in following it. Okay, so that will be our fundamental focus. And so today's class we are going to start. So let us focus on what is statics. So statics basically deals with forces which are in equilibrium. ठीक है, तो अगर मैं statics को एक लाइन में बोलना चाहूँ, then statics basically deals with forces, on forces किस पे, bodies पे, on bodies which are in equilibrium, which are in equilibrium। ठीक है, मतलब सपोज बहुत सारे फोर्सेस है जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, से F1 F2, से फोर्स F1 F2 F3, बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे आर से। इन सबका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे आर से, उसे हम डिनोट करेंगे आर से। और इन F1 F2 F3 को हम बोलेंगे दे आर बेसिकली द कंपोनेंट्स, दे आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स आर। ठीक है, अगर मैं वर्ड में लिखूं तो इस तरह से लिखता हूं, इफ अ सिंगल फोर्स, if a single force are acting independently, produces the same effect, as that due to a number of forces, as that due to a number of forces, say F1 F2 F3 so on etc, acting simultaneously, then R is called the resultant. R is called the resultant of F1 F2 and F3, these forces etc। ठीक, R को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। एंड इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं, in other words R is basically what, F1
plus F2 plus F3 plus so on. ठीक है, R is basically resultant of these forces. ठीक, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं, इस F1 F2 F3 को हम बोलते हैं, दे आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ R. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो the forces F1 F2 F3, these forces are basically are called the components, of force R. They are called the components of force R. ठीक है, अब देखो, अगर दो फोर्स है, सपोज फोर्स P, एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा से. ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा R, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा. ये उनका मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये आता है बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ. ये आता है बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. ठीक है, मैकेनिक्स के पार्ट में ढुकते ही सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में. ठीक है, इसका डेरिवेशन भी पढ़ा होगा कि ये आता कैसे है. ठीक है, इसको हम लोग बाई वर्ड्स लिख लेते हैं. द रिजल्टेंट the resultant of two forces, the resultant of two forces P and Q acting along OA and OB, acting along OA and OB such that angle AOB is theta is of magnitude root over P square plus Q square plus 2 into P into Q cos theta. And ठीक है, ठीक है, and if two forces are in equilibrium, then they must be of equal magnitude. And act in opposite directions along the same line.
and they must act in opposite direction along the same line. ठीक है, चलो चलो, ये दो फोर्सेस के लिए। अगर तीन फोर्सेस चले आए इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा? हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाते थे, है ना? इफ इफ three forces are in if three forces acting at a point are in equilibrium then they can be they can be represented in magnitude and direction by the sides of the triangle, by the sides of the triangle taken in order. इसको इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसका एक पर्टिकुलर नाम था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, है ना? दिस इज नोन एज this is known as the law of triangle, the law of triangle of forces. This is known as the law of triangle of forces. ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। The converse of this law, the converse of this law is also true. इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, लॉ ऑफ ट्रायंगल के फोर्सेस से हमें क्या मिलता था? लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम क्या बोलता था? अगर थ्री फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू, है ना? सो फ्रॉम द लॉ ऑफ triangle of forces we get क्या? Lami's theorem. I'm just stating the results because I know कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए हो। ठीक है, आई एम जस्ट स्टेटिंग द रिजल्ट कि ये सब तुम्हारे क्लास 11 की फिजिक्स का चीज है, तो इसके डिटेल प्रूफ में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग व्हाट वी विल एक्चुअली डू, वी विल एक्चुअली सी द स्टेटमेंट्स, वी विल सी द implications and we will directly jump to the problems which will be I would say in ascending sense to your UPSC level। ठीक है, यूपीएससी लेवल डायरेक्टली हम नहीं पकड़ेंगे, हम धीरे धीरे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस पकड़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलो। तो लेमिस थ्योरम क्या बोलता था? इफ three forces acting at a point, if three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional, to the sine of the angle
between the other two. Each force is proportional to the sine of the angle between the other two. ठीक है? And conversely इसका true. And conversely. चलो अगला रिजल्ट देखते हैं. अगला रिजल्ट क्या बोल रहा है. मान लो दो पैरेलल फोर्सेस हैं पी एंड क्यू जो ए और बी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. ठीक है. सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दो पैरेलल फोर्सेस हैं जो ए और बी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं. मान ले रहे हैं ये है फोर्स पी, ये है फोर्स क्यू. ठीक है. तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं. इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, पी प्लस क्यू के थ्रू. ठीक है. और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर क्या आएगा. देखो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इन दोनों के ही पैरेलल होगा. इन दोनों का रिजल्टेंट आर भी इन दोनों के पैरेलल होगा. आर विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू. एंड कहाँ से आएगा, पहले तो इन दोनों के पैरेलल होगा. और दिस दिस लाइन एंड दिस पॉइंट. ठीक है. एंड दिस पॉइंट will divide AB internally in the magnitude of P is to Q. In the magnitude of P is to Q. ठीक है. वर्ड्स में अगर लिखें इस तरह से लिखेंगे, the magnitude of the resultant are the magnitude of the resultant are the magnitude of the resultant are of two of two like and parallel forces. Like and parallel forces P and Q acting at A and B is the sum of their magnitudes. Is the sum of their magnitudes. That is P plus Q is the sum of their magnitudes. And the line of action are which is parallel to that of P and Q, which is parallel to that of P and Q, divides AB internally divides AB internally inversely in the ratio of the forces of P and Q. लिखने का क्या जरूरत है, P and Q लिख देते हैं. In the ratio of the forces P and Q.
इन द रेशियो ऑफ द फोर्सेस P एंड Q। ठीक है। और यही अगर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ए और बी पे एक्ट करते तो उनका रिजल्टेंट क्या होता? उनका रिजल्टेंट होता है P माइनस क्यू। उनका रिजल्टेंट होता है P माइनस क्यू। और ये जो R है ये ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, इफ टू unlike forces, if two unlike forces P and Q, P and Q act at A and B, then the magnitude, the magnitude of their resultant, then the magnitude of their resultant R is mod of P minus Q, and the line of action and the line of action R divides AB, divides AB externally, inversely in the ratio of the forces. In the ratio of the forces. तो मोमेंट अबाउट अ फोर्स क्या होता है? देखो, मोमेंट अबाउट अ फोर्स होता है द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट O of a force F whose line of action passes through a point A is OA cross F। मतलब देखो, सपोज ये है O and this is the force F, and this is the force F. Now the moment of this force about this point O is F multiplied by this A, F multiplied by this R। ठीक है, F multiplied by this R। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब देखो, नाउ नेक्स्ट लॉ क्या बोल रहा है देखो, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस if a number of forces act at a point, if a number of forces act at a point, then the algebraic sum, then the algebraic sum of their components, या फिर लिखें rectangular components, then the algebraic sum of their rectangular components along any direction, is equal to the component of their is equal to the component of their resultant in the same direction, is equal to the component of their resultant in the same direction. ठीक है, and the vector sum of the moments, the vector sum of their moments about any point, is equal to the moment of their resultant about the same point, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, देन उनका एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो कितना होगा, 0 होगा, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट ईच ऑफ द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मस्ट बी 0। ठीक है, इसको लिखते हैं, इट फॉलोज दैट it follows that if a number of forces acting at a point are in equilibrium, then the algebraic sum of their components along each of the three mutually perpendicular directions, along each of the three mutually perpendicular directions
must be 0, must be 0, or the vector sum, or the vector sum of their moments, or the vector sum of their moments about each of the three non-collinear points, about each of the three non-collinear points must be 0. ठीक है, ठीक है। मतलब अगर थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो उन्हें हमेशा कोप्लानर होना होगा, एक ही प्लेन में होना होगा, एंड दे मस्ट बी आइदर कॉन्करेंट या सबके सब पैरेलल। दैट मीन्स if three forces if three forces are in equilibrium, then they must be co-planar. Then they must be co-planar, and they must be either concurrent. They must be either concurrent, or all of them must be or all of them must be parallel, or all of them must be parallel। ठीक है, अब देखो एक ही पॉइंट पे अगर दो फोर्स ओ ए एंड ओ बी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे प्रॉब्लम्स पे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point O, acting at a point O along OA and OB respectively, along OA and OB respectively, is represented in magnitude lambda. This is represented in magnitude lambda into OA and mu into OB. Mu into OB. So this is represented by lambda plus mu into OC, where C is a point on AB such that lambda into CA बराबर mu into CB। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत हो गया थ्योरी लिखना। अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स पे। अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स पे। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है जिसका हमें काफी जरूरत पड़ेगा, उसे हम देख लेते हैं। An important result
फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। देखो मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और पी, ए बी पे एक पॉइंट है सच दैट पी जो है वो ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। सपोज पी इज अ पॉइंट on the side AB of a triangle ABC such that AP is to PB. This ratio is m:n. ठीक है, then m plus n cot theta will be equal to m cot alpha minus n cot beta. अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करें, then this angle is alpha and this angle is beta. ठीक है, and what is theta? Theta is this angle. ठीक, and m plus n cot theta, this will also be equal to n cot a minus m cot b. ये हो रहा है ये वाला एंगल एंड b हो रहा है ये वाला। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। हम लोग चले आएंगे इसके ऊपर कुछ बेस प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, हम लोग बेसिकली इस पे प्रॉब्लम्स ही ज्यादातर फोकस करते हैं। ठीक, पहला प्रॉब्लम क्या बोलता है? बोल रहा है फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट P inside a quadrilateral inside a quadrilateral ABCD represented by PA, PB, PC and PD in magnitude and direction are in equilibrium. In magnitude and in direction are in equilibrium. So find the position of P. P का पोजीशन निकालना है भैया, P का पोजीशन हमें निकालना है। ठीक है, देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल मतलब फिगर विथ फोर साइड्स। तो मान लेते हैं ये हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्या बोल रहा है? P एक पॉइंट है इसके अंदर, P एक पॉइंट है इसके अंदर एंड इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है that is represented by PA, PB, PC and PD in magnitude and direction. हमें P का पोजीशन निकालना है, हमें P का पोजीशन निकालना है, इस P का पोजीशन हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं
कि एम और एन एडी और बीसी का मिड पॉइंट है। एम एंड एन जो है वो एडी एंड बीसी का मिड पॉइंट्स है। ठीक है, देखो एडवांटेज क्या है, पी हमसे बोला है इनसाइड का कोई पॉइंट है, तो हम चालाकी से पी को इस तरह से लेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, हम चालाकी से पी को इस तरह से लेंगे, पी हम कहीं भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हम चालाकी से पी को इस तरह से लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, लेट एम एंड एन आर द या बी द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पीबी, पीबी प्लस पीसी, इन दोनों को हम लिख सकते हैं, इन दोनों का रिजल्ट किसका होगा, 2pn के बराबर होगा, है ना। पीबी एंड पीसी दोनों 2pn के बराबर होगा। एंड सिमिलरली देखो पीडी प्लस पीए ये बराबर होगा 2pn के। ठीक है, तो देखो वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 2pm प्लस pn ये बराबर होगा pa प्लस pb प्लस pc प्लस pd के। ठीक है, जो कितना दिया है, 0 दिया है, जो कितना दिया है, 0। ठीक, जो बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है अंडर दीज फोर्सेस। ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है अंडर दीज फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो mn का मिड पॉइंट आ गया, P जो है वो mn का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, देखो अगर हम AB और CD का भी मिड पॉइंट लेते, उसको भी ज्वाइन करते, तो हम इसी तरह दिखा सकते थे कि P जो है वो इन दोनों मिड पॉइंट के बीच में भी होगा, P जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में भी होगा, ये भी हम दिखा सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, देखो therefore P is the midpoint of M N, and नोट में ये लिख लो, it is also, it is also the midpoint of the line joining the midpoints of AB and CD. ठीक है, joining the midpoints of AB and CD. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, सेकंड प्रॉब्लम हमसे बोल रहा है, देखो
A uniform circular plate. A uniform circular plate of weight W is supported is supported at 3 points in its edge whose distances apart are A, B, and C. You have to find the load carried by each support. You have to find the load which is carried by each support. हम मान लेते हैं, देखो भाई बोल रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है जिसका वेट है W and which is supported at 3 points in its edge which are distances A, B, C apart. ठीक है, तो हम A, B, C लेके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम A, B, C वर्टेक्स का एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं इसी 3 पॉइंट पे जो वेट W है वो सपोर्ट खा रहा था, एंड दिस इज लेंथ A, this is length small a, this is length small c, this is length small b। ठीक है, मान लेते हैं इसका सरकम सेंटर है S। सरकम सेंटर का मतलब द पॉइंट, सरकम सेंटर का मतलब नोट में लिख लो अगर जिसको सरकम सेंटर भूल गया हो, जिसको याद ना हो। सरकम सेंटर का मतलब क्या था, वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। द पॉइंट वेयर all the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle meet। ठीक है, यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मीट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैंने सेंट्रॉइड क्यों नहीं लिया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैंने सेंट्रॉइड क्यों नहीं लिया। ठीक है, सरकम सेंटर का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इस सरकम सेंटर से ये तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। इस सर यहाँ पे जैसे सेम दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली चलो तो सेम कर देते हैं, किसी तरह से इसको एडजस्ट करके इसको सेम करने का कोशिश करते हैं। सरकम सेंटर से ये तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। मान लेते हैं ऐसे सरकम सेंटर, तो सरकम नहीं, ये नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। सरकम सेंटर से ये तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रफली रफली सेम आ रहा है। सरकम सेंटर से ये तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, तभी तो हम लोग इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों वर्टेक्स से पास करे। इस सर्कल को हम क्या बोलते थे, सरकम सर्कल, और इस रेडियस को क्या बोलते थे, सरकम रेडियस, है ना। इसको हम लोग सरकम रेडियस बोलते थे। देखो भाई, स्टैटिक्स डायनामिक्स पढ़ने के लिए जो क्लास 11-12 में तुम पढ़ के आए हो, इवन अभी तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ये तुम लोग का क्लास 9-10 का थ्योरम है, थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा स्टैटिक्स और डायनामिक्स का कोर्स करने के लिए, बिकॉज
यहाँ पर इतना मैटर मैटर सा चीज है जो हर एक चीज लेके हम लोग क्लास 9 10 पे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जस्ट बी अ लिटिल प्रोएक्टिव। अगर कोई टर्म्स तुमने पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, उसे एक बार रिकैप कर लो। दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड दैट इज ऑलवेज गुड। दिस इज हाउ यू ग्रो। ओके, सो तो अभी तक हमने जो किया उसे हम लिखते हैं। लेट एस विच इज circumcenter of triangle ABC is actually the center of the circular plate। ठीक है, हम मान लेते हैं यही हमारा सर्कुलर प्लेट था, जो ये हमें सर्कल मिल रहा है। तो मान लेते हैं यही हमारा सर्कुलर प्लेट था। मान लेते हैं यही हमारा सर्कुलर प्लेट था। ठीक है, दिस वाज आवर सर्कुलर प्लेट। अब देखो, जो वेट है वो एस से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। जो वेट है वो एस से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। द वेट डब्ल्यू एक्ट्स एट एस वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, अब देखो, अगर इस प्लेट पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस ए बी सी पे एक्ट कर रहे हैं, देन देखो क्या होगा। देन देखो क्या होगा। लेट F1 F2 and F3 be the forces, be the forces acting vertically upward, be the forces acting vertically upward on the plate A, B and C respectively, respectively। ठीक, नाउ सी, ये फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ये फोर्स जो तीनों एक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अलोंग द लाइन BC, हम अलोंग द लाइन BC अगर सबका मोमेंट्स ले, सारे फोर्सेस का, तो BC पे मोमेंट लेने के लिए, BC हमने क्यों चुना, क्योंकि तब B और C पे हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, दो परपेंडिकुलर चाहिए। पहले पहले दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं डी। और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे ड्रॉप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं से ए डैश, जिसको हम बोलते हैं देखो ए डैश। ठीक, चलो आगे बढ़ो। सो द फोर्सेस, द फोर्सेस acting on the plate are in equilibrium. The forces acting on the plate are in equilibrium. So, taking moments of the forces, taking moment of the forces about the line
BC we get, क्या मिलेगा हमको, F1 इंटू ए डी बराबर W इंटू एस ए डैश, है ना। F1 इंटू ए डी बराबर W इंटू एस ए डैश, मोमेंट लिया है हमने। दिस implies F1 will be equal to W into S A dash upon में AD, which will be equal to W into R cos A upon में C into का sin B, ठीक, which is equal to W R square into 2 cos A upon में B into C, which is equal to W into R square upon B square C square into B square plus C square minus का A square, B square plus C square minus का A square। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो, दिस implies कि भाई F1 will be equal to W R square अपॉन में A square into B square into C square into अंदर में A square into B square plus C square minus का A square, ठीक। therefore F1 अपॉन में लेमिस थ्योरम, है ना, A स्क्वायर इंटू का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर F2 अपॉन में B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर F3 अपॉन में C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, विच विल बी इक्वल टू, देखो एडेंडो अगर लगा दे, हमें क्या पता है कि भाई ए बाई, कैसे लिखे, ए बाई पी बराबर बी बाई क्यू बराबर अगर सी बाई आर हो, तो ये तीनों बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर के, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडेंडो, ठीक। लगाते हैं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आएगा इंटू का बी प्लस सी माइनस ए इंटू का सी प्लस ए माइनस बी इंटू का ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसके, एंड सिमिलर एक्सप्रेशंस विल होल्ड फॉर F2 एंड F3, यहीं पे लिख देते हैं। Similar expressions for F2 and F3,
ठीक है, ये आएगा। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रॉड of length a plus b whose center of gravity is at a distance a is at a distance a from one end in equilibrium, या लिख लो stable equilibrium, stable equilibrium in the vertical plane inside a fixed smooth sphere, inside a fixed smooth sphere. ठीक है, show that if theta be the inclination of the rod, if theta be the inclination of the rod to the horizontal, then tan theta will be b minus a upon b plus a into tan alpha, where 2 alpha is the angle subtended by the rod at the center of the sphere, at the center of the sphere। ठीक है, तो एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? ए डिस्टेंस फ्रॉम वन एज, पूरे रॉड का लेंथ है ए प्लस बी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? ए डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इनसाइड अ वर्टिकल प्लेन, इन अ वर्टिकल प्लेन इनसाइड अ फिक्स स्मूथ स्फीयर। ठीक है, अगर थीटा इस रॉड का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर थीटा इस रॉड का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, देन हमें क्या दिखाना है? कि भाई tan थीटा बराबर ये होगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इंटू टैन अल्फा,
जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सस्टेंडेड बाय द रॉड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, देखो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर समझते हैं पहले। तो एक स्मूथ स्फीयर है, एक स्मूथ स्फीयर है और इसके अंदर एक रॉड है ए बी, इसके अंदर एक रॉड है ए बी और इसका वेट इस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पर ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, रॉड का टोटल लेंथ कितना है, ए प्लस बी। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये सेंटर है, मान लेते हैं कि ये सेंटर है स्फीयर का, के साथ अगर इसको ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर है स्फीयर का, मान लेते हैं सी। ठीक है, अब देखो इस रॉड पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला तो ये वेट डब्ल्यू, और दूसरा ए और बी पे जो रिएक्शंस है, ए और बी पे जो रिएक्शंस है वो इस पे ऐड कर रहा है। ए पे रिएक्शन है सपोज, पहले बी का मान लेते हैं, बी पे रिएक्शन है सपोज आर, जो इस तरफ ऐड कर रहा है, एंड ए पे रिएक्शन है एस, जो इस तरह से ऐड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम में है तो हमने मान लिया है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि भाई ये तीनों, ये दोनों जो रिएक्शन है वो सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, थीटा क्या बोला था, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से जो है उसका थीटा इंक्लिनेशन पे है। तो देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, है ना, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, एंड ये पूरा एंगल अल्फा था। चलो ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। द रॉड is acted by three forces. The rod is acted by three forces. Its weight W and the reactions R and S at its ends, and is in equilibrium, and they are in equilibrium. Therefore, A plus B into cot of 90 degree minus theta, this will be equal to B cot A minus A cot B. This implies what? कि भाई A plus B tan theta, this will be equal to B cot 90 degree minus alpha minus A cot 90 degree minus alpha, which will be equal to B minus A tan alpha, okay, which will be equal to B minus A tan alpha. Means tan theta will be equal to B minus A upon B plus A into tan alpha. ठीक है, this was the derivation.
ये डेरिवेशन था, काफी आसान था. दिस वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं. 4 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं. 4 नंबर प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है. ये प्रॉब्लम आई थिंक 1999 आईएएस में आया था. सो 3 forces P, Q, and R, they act along the sides. They act along the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. ठीक? The resultant lies along the line joining the center. The resultant lies along the line joining the center of the circle inscribed in triangle ABC and the center of gravity, yes, CG, center of gravity of the triangular lamina ABC. हमें क्या दिखाना है? Show that P is to Q is to R, this will be equal to A into का B minus C is to B into का C minus A is to C into का A minus B. ठीक. But I believe I think ये क्वेश्चन 1979 या फिर 1989 आईएएस एग्जाम में आया था. ठीक है, बस चेक कर लेना किस ईयर आया था. ठीक है. क्या बोला है? 3 फोर्सेस हैं P Q R and they act along the sides BC, CA and AB of triangle ABC. ठीक है. इनका the resultant lies along the line joining the center of the circle inscribed in triangle ABC. inscribed का मतलब क्या है? मतलब देखो, ABC अगर ट्रायंगल था, हालांकि मैं यहाँ पे फिगर का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए बता देता हूँ. ABC अगर ट्रायंगल था तो रिजल्टेंट कहाँ लाई कर रहा है? इसके अंदर जो सर्कल बना है. इंस्क्राइब का मतलब सर्कल जो अंदर बना है, इंस्क्राइब.
इसके अंदर जो सर्कल बना है, एक सेकेंड रुको, इसके अंदर जो सर्कल बना है, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। मतलब बेसिकली कहाँ से पास कर रहा है? इन सेंटर से, क्योंकि ये है क्या, ये इन सर्कल है ना, ये इन सर्कल है। मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके इन सेंटर आई से पास कर रहा है। बोले तो इस इन सेंटर को आई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आई के अलोंग जो है वो मोमेंट ले लेंगे। इस आई के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखो, सॉल्यूशन। द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट of the forces P, Q and R about the incenter I is zero. Is zero. क्यों? Because as the resultant passes through I. As the resultant passes through I. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। Therefore, if R is the radius of the in circle, then देखो, P into R plus Q into R plus capital R into small r बराबर जीरो होना चाहिए। अब क्योंकि R जीरो नहीं है, इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस R इंटू आर जीरो हो रहा है। R यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब P प्लस क्यू प्लस R ये जीरो होना चाहिए। ये बना पहला इक्वेशन, ये यहाँ पे बना पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अगर हम मान लें कि एल्टीट्यूड से ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है, इफ ए डी बी ई एंड सी एफ आर द एल्टीट्यूड्स, देन क्या एविडेंट है, ए इंटू का ए डी बराबर बी इंटू का बी ई बराबर सी इंटू का सी एफ, विच इज ट्वाइस the area of triangle A B
C. ठीक. So now if we take moments, taking moments about G of the forces P, Q and R, क्या होगा? P into AD by 3 plus Q into BE by 3 plus R into CF by 3, which will be equal to 0. Which will be equal to 0. So this implies what? This implies भाई P by A plus का Q by B plus का R by C, this should be 0. अगर हम थ्रू आउट ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, then P into BC plus Q into AC प्लस R into AB बराबर कितना होगा? 0 होगा. इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2. इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2. So from equation 1 and 2 we get P upon में AB minus CA बराबर Q upon में BC minus AB बराबर R upon में CA minus BC. ये होगा. ठीक है. ये होगा. ठीक है. अच्छा प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम था. आगे बढ़ते हैं. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 4 हुआ है ये. प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं. क्या बोल रहा है? टू स्मॉल rings can slide on a smooth parabolic wire with its axis vertical and vertex upwards being connected by a fine
string being connected by a fine string which passes over a smooth peg, which passes over a smooth peg at the focus, which passes over a smooth peg at the focus. If the rings can rest in any position in which the string is taut, then they must be equal in weight. Then they must be equal in weight. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे. क्या बोला है क्वेश्चन में? दो स्मॉल रिंग, टू स्मॉल रिंग can slide on a smooth parabolic wire with its axis vertical and vertex upwards, being connected by a fine string which passes over a smooth peg. देखो सबसे पहले एक पैराबोला लेते हैं जिसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल है. ये रहा पैराबोला, ये रहा उसका एक्सिस. ये रहा उसका एक्सिस. ठीक है, तो टू स्मॉल रिंग स्लाइड हो सकता है स्मूथ पैराबोलिक वायर पे, एक्सिस वर्टिकल, वर्टेक्स ऊपर है, बीइंग कनेक्टेड बाय अ फाइन स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ स्मूथ पेग एट द फोकस. ठीक है, तो मान लेते हैं इस पी पोजीशन पे और क्यू पोजीशन पे दो रिंग है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग. दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग. थोड़ा अच्छा से बनाए, ये कैसा कॉकरोच जैसा बन गया है. तो अच्छा से बनाए इसको. देखो और नीचे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं P, यहाँ पे लेते हैं Q और ये लेते हैं फोकस S. तो इस वायर से कनेक्टेड है ये दोनों. ये है P, ये है Q. ठीक, और ये है टेंशन T, ये है टेंशन T डैश और ये है वेट M इंटू G. ये है वेट M डैश इंटू G जो एक्ट कर रहा है. ठीक, ये A को हम बोल दे रहे हैं वर्टेक्स. ठीक, अब देखो P जो है रिंग जो P पे है वो इक्विलिब्रियम है अंडर थ्री फोर्सेस. वो इक्विलिब्रियम है अंडर थ्री फोर्सेस. कौन कौन सा फोर्सेस? फोर्सेस है यहाँ पे, फोर्सेस है यहाँ पे. पहला तो इसका वेट mg, दूसरा ये टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग और तीसरा एक नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन इस पैराबोला का. तीसरा इस एक रिएक्शन व्हिच इज नॉर्मल टू दिस पैराबोला. ठीक है, सिमिलरली क्यू भी जो है वो भी इक्विलिब्रियम में है अंदर थ्री फोर्सेस. पहला वेट m डैश जी, दूसरा टेंशन, तीसरा इसका नॉर्मल
एफ डैश, तीसरा इसका नॉर्मल एफ डैश। ठीक, सो द रिंग पी is in equilibrium under the action of three forces. Under the action of three forces. पहला कौन सा? Its own weight mg. दूसरा कौन सा? The tension T of the string. एंड तीसरा कौन सा? एंड तीसरा है the reaction F normal to the parabola at P. ठीक, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर पैराबोला के किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वली इंक्लाइंड होता है एक्सिस से और उसके फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट से। देखो प्रॉपर्टी क्या है, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू अ parabola is equally inclined to the axis, and the focal distance of that point and to the focal distance of that point। ठीक है, therefore देखो therefore F is equally inclined to M into G and T, है ना। It follows that, यहाँ से ये बोल सकते हैं, it follows that T should be equal to mg. It follows that T should be equal to mg. Similarly, T dash should be equal to m dash g, है ना, जहाँ पे m dash क्या है? m dash is the mass of the string, क्यों, mass of the ring at Q, mass of the ring at Q, but T should be equal to T dash as the peg is
स्मूथ, ठीक है, एंड thus m should be equal to m dash, and thus m should be equal to m dash, ठीक है. So this completes our today's class. ठीक है, हमने आज बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम किए, ठीक, स्टैटिक्स के ऊपर. नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम जाएंगे अगले चैप्टर पे जो है फ्रिक्शन, ठीक है. बट आई विल स्ट्रेस आउट, that will very important and that will actually set the momentum for our upcoming class. और वो है that is you have what we will try to focus is a problem session oriented classes. Okay, what we will try to focus is कि हम लोग क्लास में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. Okay, that sets the momentum for our today's class, and thank you so much.